Good evening to all respected educators and welcome to our platform Prithvi अभ्युदय एसोसिएशन इंडिया पाई। एक ऐसी एसोसिएशन जो न केवल एडुकेशन के सेक्टर में एक नॉलेज शेयरिंग का काम कर रही है, बल्कि उन रिस्पेक्टेड एडुकेटर्स जिनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो जॉबलेस हैं, जो हेल्पलेस हैं, उन सबको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने में ये एसोसिएशन मदद करती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन जो नॉलेज शेयरिंग के लिए हमारे रिस्पेक्टेड एडुकेटर्स के साथ मिल करके विभिन्न प्रकार के वेबिनार, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वेबिनार्स, इसके अलावा अभी हमारा जो एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले कुछ वीक्स से स्टार्ट किया हुआ है, जिसको हम पाई की संसद के तौर पे जानते हैं। ऐसी पाई की संसद जहां पर आज के ज्वलंत मुद्दे, करंट इश्यूज, करंट टॉपिक्स के ऊपर डिबेट रखी जाती है, जिसमें पैन इंडिया के पूरे वर्ल्ड से जो एडुकेटर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अपने व्यूज उन टॉपिक्स के ऊपर रखते हैं, उस डिबेट में जो अपने व्यूज रखते हैं, ताकि उसका एक सही मायने में एक हेल्दी जो कंक्लूजन है वो उसका हम लोग निकाल पाए। उसी के साथ हमारा अभी जो वीडियो मैंने शेयर की, एक हमारी ये एसोसिएशन हमारे रिस्पेक्टेड एडुकेटर्स को फेलिसिटेट करने के लिए, उनको जो है उनके कार्य क्षेत्र में उन्होंने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जो अचीवमेंट्स उनकी हैं, उन सब अचीवमेंट्स के लिए उनको फेलिसिटेट करती है, उनको रिवॉर्ड देती है, जिसमें इस समय 29 मई यानी 29 मई काइट इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद के अंदर एक ग्रैंड जो है सेरेमनी ऑर्गेनाइज ये एसोसिएशन कर रही है। और उस ग्रैंड इवेंट के अंदर जो मिलने वाला अवार्ड टाइटल है वो राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान है। वो राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान जिस रिस्पेक्टेड एडुकेटर को मिलता है वो अपने नेम के आगे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न जो एक टैगलाइन के तौर पर उस वर्ड को यूज कर सकता है। एक ऐसा वर्ड जो कहीं ना कहीं हमारी पहचान बनेगा एडुकेशन के सेक्टर में। और हम बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज के तौर पे अवार्ड्स को मैं माफी चाहूंगा, लेकिन कई बार मुझे उन वर्ड्स का यूज करना पड़ता है। हम उन अवार्ड्स को सेल नहीं करते, बल्कि एक ऐसा अमाउंट हम लोगों ने रखा है जिसको सभी रिस्पेक्टेड एडुकेटर्स इजीली बियर कर पाए। ओनली 500 रुपीज ये एसोसिएशन किसी भी अवार्ड के नॉमिनेशन के तौर पे चार्ज करती है। इसके अलावा किसी भी टाइप का कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई अलग किसी भी टाइप का जो है कोई आपसे चार्जेस नहीं लिया जाता है। ओनली 500 रुपीज हम लोग नॉमिनेशन के तौर पे चार्ज करते हैं। आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम में 500 रुपीज कुछ भी एक अमाउंट नहीं है। और उस 500 के अमाउंट में इसी पाई एसोसिएशन ने जो 13 नवंबर 2021 को हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, उसमें सभी रिस्पेक्टेड एडुकेटर्स को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी से लेकर के उनको अकोमोडेट किया था। उनका डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ पाई एसोसिएशन की तरफ से दिया गया था। ये विद इन 500 रुपीज हम लोगों ने प्रोवाइड किया। बड़े बड़े सिटीज के अंदर वो सब एक अमाउंट बहुत कम पड़ जाता है, तो वहां पर जो एक अमाउंट हम लोगों ने 500 रुपीज रखा है, उसी में पीके गुरु सर हमने नॉमिनेशन फॉर्म ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आपको फिर से एक बार शेयर कर देंगे ताकि आप उसको फिल कर पाए। बहुत इजी नॉमिनेशन फॉर्म है, वो आपको फिल करना है। उसके बाद हमारी जूरी टीम जो बैठती है, जूरी टीम उसमें से सिलेक्ट करती है कि किस रिस्पेक्टेड एडुकेटर को वो अवार्ड दिया जा सकता है। ये अवार्ड सिर्फ और सिर्फ उन चुनिंदा
एडुकेटर्स को ही दिया जाएगा जिन्होंने वाकई में एजुकेशन के सेक्टर में वर्क किया है। कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज जिनको वाकई में रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, जिनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज रहे, कोई कंपनीज ने आज के टाइम में बड़े-बड़े चार्जेस है, 10,000, 20,000, 50,000 आप लोग पे करिए। 1 लाख रुपीज अगर आप पे करते तो आपको जो थाईलैंड में हम लोग ले जाके अवार्ड को करेंगे, मॉरिशस में ले जाकर के हम अवार्ड सेरेमनी करेंगे। तो ऐसे अवार्ड्स की बजाय हम लोगों ने कहा उन रिस्पेक्टेड एडुकेटर जिन्होंने वाकई में एजुकेशन के सेक्टर में वर्क किया है, उनको हम लोग फेलिसिटेट करेंगे। और जो मैंने कहा फाइनेंशियल हेल्प, जिन एडुकेटर्स के पास जॉब नहीं है, उन एडुकेटर्स को विद इन 1 मंथ ये एसोसिएशन जॉब प्रोवाइड करती है। और अगर विद इन 1 मंथ हम जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो अगले जो नेक्स्ट 3 मंथ्स होंगे, उन 3 महीनों के लिए ये एसोसिएशन रीजंस फाइंड आउट करने के बाद ये एसोसिएशन उस रिस्पेक्टेड एडुकेटर को 10,000 पर मंथ पे करती है, ताकि वो अपने घर का खर्च चला सके। और ये टोटली नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक पाई एसोसिएशन की तरफ से डोनेशन है, किसी भी रिस्पेक्टेड एडुकेटर को वो अमाउंट वापस करने की नीड नहीं होगी। इसके अलावा जिन रिस्पेक्टेड एडुकेटर्स को फिजिकल इश्यूज हैं, उनको ये एसोसिएशन जो है उन लोगों को, उन रिस्पेक्टेड एडुकेटर्स को 1 लाख रुपीज से लेकर 2 लाख रुपीज की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है, जो कि टोटली पाई एसोसिएशन की तरफ से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी किसी भी प्रकार का चार्जेस रिस्पेक्टेड एडुकेटर को बियर करना नहीं पड़ता है। ये सब पाई एसोसिएशन हमारे इस एडुकेशन कम्युनिटी को जो मजबूत करने के लिए कर रही है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए कर रही है। सर, ये फिजिकल अवार्ड सेरेमनीज रहेंगी, इसमें हमने एक फाइनल रखा है कि किसी भी कंडीशन में अवार्ड कुरियर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम फिजिकल इवेंट को कर रहे हैं लाखों रुपया लगा करके, ताकि आप जैसे सम्मानित शिक्षाविदों से, रिस्पेक्टेड एडुकेटर्स जो हैं, आप जैसे रिस्पेक्टेड एडुकेटर्स से हम लोग कुछ सीख सकें, हम लोग आप लोगों से बहुत सारी नॉलेज ले सकें। इसलिए हम ये फिजिकल इवेंट करते हैं, किसी भी टाइप में हम अवार्ड कुरियर नहीं करते हैं। आज उसी कड़ी में जहां पर ये एसोसिएशन नॉलेज शेयरिंग की बात करती है, जहां पर पाई की संसद जैसा कॉन्सेप्ट ये एसोसिएशन लेके आई, आज ऐसे ही एक टॉपिक के साथ पाई की फैमिली, पाई का ये परिवार, क्योंकि मैं इसको एसोसिएशन कम फैमिली ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि जब हम सब एक एडुकेटर्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो वो एडुकेटर्स की एक फैमिली बनती है, परिवार बनता है। और उस परिवार के सुख दुख में शामिल होना इस परिवार को अच्छे से आता है, अच्छे से हम लोग सभी के दुख दर्द को साझा करने में सक्षम है, कैपेबल है। उसी कड़ी में आज एक टॉपिक के साथ हम लोग फिर से आए हैं कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो एडुकेशन के एग्जाम के फियर को जो है वो भगा सकते हैं। आज 2 साल के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर्ड्स सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में बैठने वाले हैं, और वहां पर स्टूडेंट्स से लेकर उनके पेरेंट्स, टीचर्स सभी जो है हैरान है, परेशान है कि 2 साल के बाद बच्चों की एकदम से एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम देने की जो उनका एक हैबिट थी वो छूट चुकी है। अब पता नहीं कैसा एग्जाम होगा, किस तरीके का रिजल्ट आएगा, कैसे वो बच्चे उस चीज को करेंगे, कहीं हमारे स्कूल का जो रैप चला जाएगा। इन सभी जो है चैलेंजेस के साथ सभी के सभी सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स का वेट कर रहे हैं। उस टाइम पर ये एसोसिएशन एक ऐसा टॉपिक लेके आई कि किस तरीके से उस डर को हम लोग भगा सकते हैं, कैसे उस डर को दूर किया जा सकता है, और कैसे उस फियर्स पर काबू पा करके वाकई में दोबारा से जो बच्चे जिन्होंने 2 साल से बोर्ड एग्जाम्स नहीं दिए, वो अपने रिजल्ट में सुधार कर सकते हैं। और इस टॉपिक के आज के हमारे एमिनेंट कीनोट स्पीकर हैं मिसेस शारदा चक्रवर्ती, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। और शारदा चक्रवर्ती में पीजीटी बायोलॉजी है, करियर काउंसलर हैं, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ गोल्डन फ्यूचर करियर एंड काउंसलिंग, AIEF सर्टिफाइड रिसोर्स पर्सन। और इसके अलावा एक स्टेम पाई एसोसिएशन ने भी जो है शारदा मैम के ऊपर हमने लगाई हुई है अपनी। ये हमारी पाई एसोसिएशन के वेस्ट बंगाल स्टेट के प्रेसिडेंट है। तो शारदा मैम, क्योंकि मैंने लगभग पहले ही काफी टाइम ले लिया है, नाउ प्लेटफॉर्म इज योर्स, ओवर टू यू मैम। Thank you, Harshvardhan sir. Thank you so much for giving so much of respect, so much of love. Really, it's like you
truly said, it's like a family. Really, I also feel it as my extended family. And thank you to Sonia ma'am also for coordinating and always being there. Thank you so much ma'am for helping and being a link between sir and me. Thank you so much. And as rightly You're said, most welcome, Sharda ma'am. I haven't done anything. It's all your efforts. It's your own contribution that has brought you here. thank you Sonia ma'am, thank you so much. As Sir said, exams are approaching and our children are back after almost 2 years. And after 2 years, they are really in a big mess how to do it, how to co-op, because their writing skills have come to, I think, decreased a lot. They are not able to write. When I see my students, I see them struggling writing. So now, because it's the exam time, we as a teacher, how we can give tips to our students so that they can get little stress free and relaxed to give the exam. So I want to, with sir's due respect, may I share the presentation, sir? Yes, ma'am, please. Okay, thank you, sir. Thank you so much. I hope the presentation is clear to all of you. This is say goodbye to exam phobia. The students who are back, we should understand they were struggling many times. The students were not having uh, a separate room also. They were sharing their mobile with their parents, with their mother. In one room, they have done their classes for last 2 years approximately. Have you ever found the students saying, I don't hate school, I just hate the homework, the exams, and waking up in the morning? This is very true for my students where I work in Haryana Vidya Mandir, Salt Lake. The reporting time is 6:50. It's really very hard for the students to get up early in the morning, especially during winters. They hate waking up in the morning, but when they come to school, they really enjoy. Now, coming back to the topic, exam stress. The students, they are facing lot of exam stress. There are some shocking facts about the exam stress. This pressure, the pressure may result in feeling of anxiety or nervousness. And this exam stress can interfere with the individual's daily life. According to the National Crime Records Bureau, NCRB, in the 5 years leading to 2015, this is the older data, 39,775 students killed themselves. The number of attempted suicides may be unreported. There are many cases which are not reported. And in India, it is the world's highest suicide rates for youth aged between 15 to 29, according to a 2012 Lancet report. And the figures which will be presented in the latest year, it may also be very shocking. We have seen many students, because of the stress of the exam, and there are many pressures, the students are not able to withstand. So from where does this exam stress comes from? This is the pressure from the parents, pressure from the society, their own pressure, their peer pressure, lots of pressure. Second, high expectations. The parents' expectations are going higher and higher. In this competitive world, they want their child to be the first student of the class. Maybe it's not possible. It is beyond their capability. But the student is always pressurized for being the first student or getting 90% and above. Competitiveness. They are always in a competitive mood, even for 1 mark. Cutthroat competition.
But I think the corona has told and taught us it's better to collaborate than to compete. Then comparison with others. They always compare. He got this much mark, Mr. Sharma's daughter got this marks, and my best friend, how come he got the better marks than me? Instead of asking, what are the tips, how you have got so good marks, they start comparing. Fear of rejection. Of course, in today's world, right from the young age, the students are taught being engineer, doctor, chartered. These are the respected positions. A person gets respected positions if you are getting very good position in the society. So they feel rejected. What if I get less marks? But being a career counselor, I know there are so many careers for each and everybody, and there are lots and lots of space for everyone. Fear of being ridiculed. People, they give them so many remarks, so many taglines for achieving less marks in the exam. What are the causes of the exam stress? Why the student is getting so much of exam stress? Lack of preparation. The students till end, they think they are not prepared. They don't have the time management. They forget to understand 24 hours. We always calculate our time in 24 hours. But most of the time, 7 hours, we are sleeping. 3 hours, we are doing like eating or other things. So how much left out of removing this 10 hours? Only 14 hours left. The students should understand, if like I'm a science student, my preparation time, my time management should be this. I should study about 5 to 6 hours. Commerce students can do little less. So they should have poor time management, but due to poor time management, the stress is there. Poor study habits. They don't even better for me. Whether the audible, they love, like many students, they can learn when they listen. Some students can understand much better if they write. And some students understand better, which I think is the best method, group discussion. When they discuss and when they teach somebody, then that particular part becomes more and more in their hands. They can understand that much better when they teach somebody. Then they are worrying about some things which cannot be changed, like the past performance on the exam. Maybe the first term exam was not good, so they are worrying about it instead of focusing on the present. Then how other friends and students are doing, they are more concerned. And the negative consequence of failure. What will happen if I'll fail, if I'll get less marks? Because today, I think nobody is satisfied with 70 to 80% also. But the joint IITs, the minimum percentage is 60%. But the students, they are running behind the marks instead of knowledge. They are just learning and vomiting instead of applying, understanding it, which will help them in the future. So this is the cause of the exam stress. And how will you spot if your student is stressed? There are few symptoms, because every problem, there is a symptom. The students always look tired because they are not able to understand how to manage the time, and they are focusing only on the topics which they don't know. They don't know only 20%, they know 80%. But instead of focusing on 80%, they focus on that 20%. And that 20% is beyond sometimes their capacity. They are not able to understand. Being the teacher of class 9, 10, 11, and 12, I have often seen
And I always tell them, advise them and guide them to focus on what they know, and they can excel with that particular 80% also. They cry, they feel sad. Sometimes they have panic attacks. Broken sleep, they cannot sleep at a stretch because they are always thinking something is going there in their mind. Stomach upsets. Colds and flu, this is another symptom. Itchy skin rashes, and ache in their body because of the muscular tensions. Then what are the tips to manage exam stress? And this is my lovely part. I love this. I keep on telling my students, and even I have my 2 teenager children, my daughter who is in class 12 and son who is in class 9. I also guide them along with my students. So what are the tips? First of all, you should be organized. Organized in the sense, like, I think you all educators, you know that today you don't even have to take books in your classroom. You just keep on teaching. But remember those first and second year where you used to even take your books, learn and make notes before going to the class. But the practice of teaching for so many years that even now today you don't even need books, and your teaching is getting better day by year because of practice. So now they have to be organized, like what I have to study and what I have to revise. This is my tip, very, very important tip. Suppose you have a student has done topic 1 today in physics, for example. So next time when he's sitting or she's sitting for her topic 2, they should revise topic 1, because it will become much more clearer at that time when they're revising. Second important thing, diet. Diet is very important. They should focus on balanced diet and more protein. Protein diets like almonds, they are very good for their brain. And Brahmi, I think you all know that Brahmi, that is a vegetable, green vegetable, which can be used by the children daily, which can increase their brain power, brain capacity. And good sprouted pulses, which are very, very good for the students. So diet is very, very important, because I remember when I was in class 11 and 12, I was in the hostel. So there was one phrase everybody used to say, key students should have 5 things. Like one of them was, during exam, the food should be lighter and it should be healthier food. So in the hostel, we used to take light food so that we can study late night, because there were no parents who will tell us, who can give us coffee or who can give us Bonvita. So we always focused on a good diet, light and good diet. Then relax. They should remain relaxed. My father, who was taught in Nainital by the British people, most of the teachers were from England. So they used to. My father used to tell, the teachers used to tell them, rest is best before the test. So this was their advice to their students always. Rest is best before the test. You should be relaxed. I have seen one of my students who was well prepared for his NIT, but he did not sleep last night before the exam. And in physics, when he was filling the bubbles, what he did, a major mistake. Actually, he did not attempt question number 1. But when he was bubbling in the answers, he started marking from question number 1, because his brain was not coordinating. As a result, he got less marks in physics. His preparation was good, but he did not relax the night before the exam. So this is the mistake which our children do. They go to sleep at 3 o'clock, 4 o'clock before the exam. That's not done.
They should relax. They should plan. What is my plan? For example, as a CBSE teacher, there are three things a child should focus on. First, NCERT books. Second, the exemplar, NCERT exemplars. Third, the board papers, last 10 years. So they should have some plannings, like what I have to do. Then the cross check, whether I have done it, everything is prepared before the exam. Have I done everything, or what is left? The cross check is very important. Before the exam, of course, there should be no mobiles, because mobile, we all have seen, it has created a lot of distraction. The other day, after the exam, first term exam results were declared, one of my students called me up and told me, "Ma'am, I got only 51% in the first term." He was a good student, but he was not able to get more than 51%. So I said, reason. He told me, "Ma'am, mobile distracted me." I told, mobile is non-living. How can mobile come to you and ask you to please hold me and please open the Facebook, open the WhatsApp? It did not come. You went. So stop this blame game that due to mobile, I got less marks. Take the responsibility. First, you should know, accept that I have done some mistake, and then you can focus on your second term. I think 1 week before I called him up, his phone was switched off. I called his sister, who was also my ex-student. She told, "Ma'am, now XYZ, he's not focusing on most of the time." I said, great. He took my advice. So the mobile can be used for your distraction and your construction. There are many students, many people I have seen that they cleared their IAS exams just by seeing the YouTube videos. So there they have used it for their construction. So that is my request. Use it for your construction, not for your distractions. Then manage time. For a given exam, if there are 3 hours, you should manage the time. This particular time, I'm going to devote for my 5 marks questions. This much to 3 marks. And there is always word limit in CBSE. There is a word limit. I have seen many students writing, they are writing 2-mark question, and they are taking 2 pages to complete that 2-mark question. And in the last, they say, "Ma'am, I could not finish my exam." So that is very, very sad. They know, but they could not manage time. So time should be managed. So this managing time is a big topic, which I think I'll cover someday. Then avoid discussion before the exam. There are students who keep on discussing before the exam. And I have seen, and they get very much panic. "Oh, I have not studied this. I have not done this." No, don't discuss before the exam. Just be calm, be focused. Whatever you have learned is okay. Revise that if you want. Avoid discussion. What you have read, तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, अच्छा इसको बता दो. That you will not remember. The students will forget, and also forget what they have studied. Then positive self-talks is very important. Positive mind. Yes, I can do it. Yes, I'm prepared. So this should be a positive self-talk, because if you ask a poor question, a poor answer will come from the heart. So always ask good questions, give positive vibes, which is very, very important. Always arrive on time in the examination hall. I have seen students that they enter the gate in the last minute, and when they enter, they are lost. They are so confused where to keep the bag, which thing to carry, and then their stress starts. So always arrive on time in the examination hall. So what we can do during the exam, before, like you're sitting in the examination hall, breathe, which is very important. 3 long deep breaths, which will make you relaxed, and the oxygen will reach to all the parts of your body. Just breathe 3 times.
Deep breathe. Read the directions, whatever the directions are given in the question paper. Positive attitude. I am prepared. I have learned everything. I have devoted my time, precious time, because time cannot come back. You can buy everything, but not time. So I have invested my time studying. And do what you can do first to gain confidence. I gave one tip to my student who was there in class 10, 3 years back today. He's doing his medical. So that I gave tips to everybody. I keep on giving. So I told during maths exam what you can do. I said, if you think you are stuck up somewhere, because in CBSE there is part marking. So I said, if you are stuck, just stop there, take fresh page and start a new question. Because what happens when you start doing and your brain knows it's wrong? So that time there is a setback and a shock message goes to the brain. But when you leave it, what happens? Brain knows that after some time, when all the questions are over, I can come back. And that boy got 100 on 100. I told to many students, but he took that advice and he told me later on, ma'am, I was stuck up in the very first question, first 5-mark question. Because in maths, they start from the 5 marks. So he said, ma'am, I was stuck up. Then I remembered your voice was echoing. Leave it. Because even if you do wrong and even if you leave, you will get the part marking. I left. And at the end, I saw there were 20 minutes left. And I did that question and it was correct. So please do. First, you should do with the questions where you have confidence. And stop when you are done. Just don't look here, look there, what that child has done, because it will give a bad impression to the examiner, the person, invigilator sitting there. After exam, forget what you have done in the examination room temporarily and reward yourself with good food, chocolate, and so that because you have done, you have come out, you have given your 100%. So reward yourself and forget about the exam temporarily because you have to start for the next exam. What happens if you keep the stress? There are many things like which happens because of the exam stress. First of all, physiological stress. What happens in the physiological, your physiology, your body, like headache, then muscle tension, pain, okay, chest pain. Sometimes the students, they experience because they are feeling so stressed, and the heart and the brain coordination is not going on. Heart is saying something, brain is saying something, stomach upset, sleep problems. So that should not be done because you have worked hard. You know the end result. I want this much. Behavioral problems like overeating. Some students, they start doing overeating. Some students, they undereat. They don't even feel hungry. Some students, they get very much like they become angry young man. They always start shouting for no reason. Social withdrawal. Sometimes they don't want to meet with with other people because I'm this type of behavior they keep on showing. Then emotional. Some students, they get very frustrated. They become moody. They are avoiding others. Low self-esteem. So these are the effects. Negative attitude, always negativity. Poor performance everywhere in the exam. I told you about the sleep disturbances and illness. So why we should go for this exam stress? Because we have given our 100%. So we know the result will be good. And always remember, not all stress is bad. 67% started more hard work after being failed in exam. And that is, and I'm the example. When I was in class 11, I was in the hostel. And as you know, till class 10, parents used to tell us, take Horlicks and get up in the morning and study. They were after us. But in first term, I was unable to take this pressure of like homesickness was there, and I failed in one subject in first term. And the result,
went to Chandigarh, where I was there at that time by that time the post, and my father opened, and first time in my life I failed. He did not say, of course, he said, but he did not say that much. So after that, I worked harder, and cleared my final term with flying colors. So have a positive attitude. Always you can take lessons, and after that, I never failed. I never failed, and that was a lesson. Always affirm positive self-talk, because change your thoughts will help to change the world. Like, I can and I will. Everything is possible. I'm the champion. I'm the best. I trust and believe myself. I love and accept myself. So always affirm positive self-talk, because what you keep on telling yourself, if you are positive and your brain understands, then miracle happens. And I have done this miracle in last 2 years with the help of this affirmations. I have always talk positive. I always, whenever I'm talking to my students, I'm always positive, always positive. In their negativity also, I find something positive. And I'm very, very happy, and I feel so much that always my students have given me their love and respect wherever, like I have taught. So make a commitment today. Take ownership and responsibility. Be responsible to yourself, to your studies, to your exam, to your career, and to your life. Make a commitment. Because I have seen in many cases, the students, they don't take ownership. They don't take the responsibility. But once the students will start taking the responsibility, I'm 100% sure the stress will go, and they will come out with the flying colors. So this was all about my today's presentation. Thank you, sir, for giving this wonderful opportunity. And thank you from the bottom of my heart. Thank you so much, शारदा मैम. आपने वाकई में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रखे जो स्टूडेंट्स को वाकई में अपने माइंड में रखने चाहिए. और टीचर्स और पेरेंट्स को वाकई मैं भी मानता हूँ इस चीज को, कहीं ना कहीं एग्जाम्स इतना मैटर नहीं, मार्क्स इतने मैटर नहीं करते जितना उनका प्रेशर डाल दिया जाता है. और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग सोच के चलते हैं, लेकिन आज के टाइम में कहीं ना कहीं एक चीज ये हावी हो गई है कि मार्क्स मैटर करते हैं. तो उसका फोबिया थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के माइंड में से हमें निकालना होगा. और मैं तो चैट बॉक्स देख रहा हूँ कि एक्सीलेंट सेशन, कांग्रेचुलेशंस मैम, एक्सीलेंट सेशन, एक्सीलेंट सेशन, एक्सीलेंट, पूरा का पूरा जो है चैट बॉक्स इस टाइम पे भरा हुआ है. मेरू शर्मा मैम कह रहे हैं अमेजिंग, लव्ड इट टू मच. मोहम्मद सनी सर कह रहे हैं ग्रेट सबमिशंस. कविता बी आर मैम, वंडरफुल मैम, नाइस थॉट्स. डॉक्टर दीप्ति गौर मैम, और भी बहुत सारे सभी रिस्पेक्टेड एडुकेटर्स के. और मैं कई बार तो इन रिस्पेक्टेड एडुकेटर्स को देख करके इतना खुश होता हूँ. ये वो रिस्पेक्टेड एडुकेटर्स हैं जिनके नेम जो है ना, जब मैं सर्टिफिकेट्स रेडी करवाता हूँ या करता हूँ, उस टाइम पे आंखें बंद करके पता चल जाता है कि इसमें किस किस के सर्टिफिकेट बनने हैं. क्योंकि ये रेगुलर हमारे वेबिनार्स को, हमारे जो पाई की संसद है उसको अटेंड करते हैं. उन्हें बहुत सारे नाम है, कोई एक नाम नहीं है. डॉक्टर पराग अग्रवाल हैं, दीप्ति गौर मैम है, राजेश सर हैं, आलोक सर हैं, ओम प्रकाश सर हैं, मीनू मैम है, मोहम्मद सानी सर हैं, कविता बिहार मैडम है, सुनीता चावन जी हैं, भास्कर राव सर हैं, और हमारे एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट जो है दोनों, मीनाक्षी मैम और तमन्ना मैम दोनों हैं. इनके अलावा सभी रिस्पेक्टेड एडुकेटर्स ऐसे हैं जिनके नेम अब तो मुझे ना कहीं जुबान के ऊपर जिसको बोलते हैं चढ़ गए हैं. तो आप सभी का भी थैंक यू, धन्यवाद. आपका थैंक्स कि आप सब जो अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल करके इन वेबिनार्स को अटेंड करते हैं और अपनी नॉलेज गेन करते हैं और अपने भी बहुत सारे आइडियाज हमारे साथ शेयर करते हैं.
आज के हमारे इस वेबिनार के, जिसको हम लोग कहें कि कहीं जो केंद्र बिंदु है, जो सेंटर पॉइंट है, मिसेज शारदा चक्रवर्ती मैम, उन्होंने वाकई में आज के इस वेबिनार के अंदर 4 चांद लगा दिए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा था कि किसी भी पॉइंट को हम लोग मिस नहीं कर सकते थे। कोई ऐसा पॉइंट मुझे नहीं लग रहा था कि जहां पे हम लोग इसको मिस करके आगे निकल सकें, या किसी चीज को छोड़ करके या उसको सुनना बंद कर पाए। कंटिन्यूसली उस चीज को जो है सुनने का मन हो रहा था कि कहीं कोई पॉइंट अगर छूट गया तो हमें लगा, आज ये फील हो रहा था कि कोई ऐसा पॉइंट ना रह जाए जिसको हम वाकई में फिर बाद में मिस करते रह जाए, कि काश ये पॉइंट हम लोग सुन लेते और उस टाइम पे हम लोग उस चीज को कर पाते। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर दीप्ति गौर मैम। पाई की संसद हमारा, इसीलिए हमने एक ऐसी संसद का, पाई की संसद यानी पाई की पार्लियामेंट का हमने वो किया है कि सभी वहां पर अपने अपने डिबेट के तौर पर एक पैनल डिस्कशन कम डिबेट हम लोग उसको रखते हैं, और उस चीज के लिए हम लोग करते हैं। आज भी जिस तरीके से हमारा चलता है उसी तरीके से टॉक शो और सारी चीजें हमारी रहेंगी, जब तक सोनिया चंतानी मैम, जो कि पूरे के पूरे वेबिनार्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके जो है कंधों पर है, वो भी आज हमारे साथ हैं। तो मैम, मैं चाहूंगा कि आप भी जो है शारदा मैम के लिए कुछ कहें। सर, उनका सेशन बहुत ही अच्छा रहा। एक्चुअली उन्होंने बहुत छोटी छोटी बातें हमें बताई, जो मतलब आमतौर से हर बच्चे के साथ होती है। कई बार ऐसा होता है कि उनका अटेंशन लैक करता है, कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो अच्छे नहीं होते, तो उनके अंदर एक फोबिया हो जाता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को करने का। कई बार ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस उनके अपने क्रिएट किए हुए भी हो सकते हैं, कई बार उनके फैमिली एनवायरनमेंट में भी होता है कि वो बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तो ऐसी कई कई चीजें हैं जो आती। और जैसे उन्होंने कहा कि ये गैजेट एडिक्शन, ये एक बहुत बड़ी चीज है बच्चों के लिए। बच्चे गैजेट्स में वाकई बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए, लेकिन हम उन्हें दोष नहीं दे सकते क्योंकि लास्ट 2 साल से उनकी पढ़ाई चली उन गैजेट्स पे रही है। आपने जो पॉइंट रखा मैम, दैट वाज फैंटास्टिक। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपने बताई है, जैसे सुसाइडल रेट्स आपने बताए, जो फ्रस्ट्रेशन रेट था, मतलब एंजाइटी है बच्चों में, वाकई ये हमें आम देखने को मिलता है बच्चों में। और आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छा था, जिस तरह से वो स्टूडेंट ने आपकी बात को फॉलो करके और अपना मैथ्स का पेपर दिया। आई एम श्योर अगर हर बच्चा इन टिप्स को याद रखे तो कोई भी बच्चा जो है वो फेल कभी नहीं होगा, वो इतना तो पार कर ही जाएगा अपने एग्जाम्स में। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. And thank you all the educators. डॉक्टर अर्चना बज मैम भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अर्चना मैम हमारे जो है एसोसिएशन के एक ऐसे नवरत्नों में से है। जिस तरीके से जो है विक्रमादित्य जी के यहाँ नवरत्न होते थे, उसी तरीके से नवरत्नों में से एक हमारे डॉक्टर अर्चना बज मैम है। डॉक्टर अर्चना बज मैम, आर यू हियर? यस सर, आई एम हियर सर। सर, इतना अच्छा सुनने के बाद तो सर डेफिनेटली बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है। शारदा मैम को मैं पहले से सुनती आ रही हूँ, और डेफिनेटली जो आज का सेशन था मैम, दैट्स रियली वेरी इंफॉर्मेटिव। जहाँ तक मुझे लगता है मैम, आपने हर चीज कवर की। इवन दो मैं अगर छोटे से शब्दों में बोलना चाहूँ तो आपने गागर में सागर भरने का पूरा प्रयत्न किया है मैम। और डेफिनेटली मतलब पूरी तरीके से आपने जो भी चीजें कवर हो सकती थी, you have covered each and everything, whether it's been gadgets, whether it's been student stress which is there into their minds before the examination, and the parents' role in their studies, and the expectation of parents and society, and their stress level goes in such a high. We know कि हमने सुना था गरिमा मैम के एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। We heard the complete story about that student. So there are a lot of other things also which are there in the life of a student. And when it comes to board, तो हमारे यहाँ पर एक फोबिया बना दिया गया है कि बोर्ड एग्जाम्स, चाहे वो कुछ भी हो, बोर्ड एग्जाम्स का एक फोबिया है कि अरे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, यू हैव टू परफॉर्म बेटर, you have to do a lot of good things, 94%, 95%, and there's a race, अंधाधुंध रेस है। और मैम आपने हर चीज कवर की है। अगर ये चीज है स्टूडेंट्स को, मैं एक्चुअली चाह रही थी, मैं नहीं कर पाई कनेक्ट। नहीं मैम, ये वाला सेशन सर अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे और हमारे स्टूडेंट्स को हम लोग ये सेशन सुनाएं,
तो मेरे को लगता है स्टूडेंट्स का स्ट्रेस बिल्कुल चला जाएगा। तो ये डेफिनेटली एजुकेटर्स के लिए तो बहुत अच्छा सेशन है, पर स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली गुड होगा मैम। तो एक बार स्टूडेंट्स को भी हम लोग गैदर करके वहां पर स्कूल्स में भी जितने एजुकेटर्स यहाँ पर अभी हैं इस सेशन में, आई रिक्वेस्ट देम ऑल कि आप अपने अपने स्कूल में इस सेशन को जरूर इसकी रिकॉर्डिंग सुनाएं और उन लोगों को स्टूडेंट्स को जो है वो बताएं कि ये स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट एन फोबिया, आप इससे बाहर निकल सकते हैं। और जो आपने टिप्स दिए हैं, रिवीजन का टिप्स दिया है आपने, उसको जो दिया है कि एक कंप्लीट स्लीप लेना है बिफोर द एग्जाम और अपने मोबाइल वगैरह को साइड में रखना, ये सारे जो आपने एग्जाम्पल्स दिए ये बहुत अच्छे हैं मैम। और डेफिनेटली अगर स्टूडेंट्स इसको फॉलो करेंगे तो दे डेफिनेटली कम विद द फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू सो मच मैम फॉर this great effort. Thank you so much. Thank you, Rachana ma'am. Really, you have said so beautifully. And when I was preparing, I was keeping in mind मेरे 2 अपने बच्चे हैं जो कि टीनेजर्स हैं और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है यहाँ पे आज। मैं देख रही हूँ वो लोग सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं क्योंकि ग्रुप में तो नहीं डाल पाई, मैंने अपने स्टेटस में अपडेट किया था because directly I can't put it there without permission. So they have joined, I'm seeing, and they are my students. They are in class 12 now. They have joined, so I'm so happy that I was able to cover. And if these tips can help them, all the students in India, and because now if we take the example of Google, Tesla, Amazon, they have already proved marks are not important. Skills matter. ये अगर हमारे बच्चों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है इस बात को बार बार, अब हम स्टूडेंट्स को यही सिखा रहे हैं। मेरा कल यस्टरडे मेरे साथ उनके साथ लाइक इट वाज माय फर्स्ट क्लास, तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कि जस्ट पुट व्हाट डू यू वांट 60% एंड टू क्रैक IIT, happy, I'm happy. If you want 90% and NIT next year, I'm happy, but put it in big words everywhere in the wall and work accordingly. Whatever is your outcome, whatever you want, because joint ने भी अपना 60% किया, उसने तो 90% नहीं किया है। तो ऐसे बच्चों को स्ट्रेस लेने का जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं उनसे ही करती हूँ, क्योंकि ज्यादातर मैं 11-12 की क्लास टीचर रहती हूँ, तो मैंने समझाती रहती हूँ हमेशा। Do agree मैम, वेरी गुड थॉट्स मैम। और डेफिनेटली मैम ऐसे थॉट्स हम सबके बीइंग इन पेरेंट्स, एज अ टीचर एंड बीइंग इन पेरेंट्स, हम लोग के होंगे तो मैम डेफिनेटली हर बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। हर बच्चे के पास अपनी एक स्पेशल क्वालिटी होती है, एक स्पेशल स्ट्रेंथ होती है। नॉट इवन इन स्टडीज, वो और भी चीजों में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम उनको पुश देंगे तो आगे का जो हम सपना देख रहे हैं यूथ का, हमारा एक ब्राइट फ्यूचर, वो डेफिनेटली हमारा पूरा होगा। मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना मैम। इसके अलावा कोई रिस्पेक्टेड एजुकेटर हमारे जो कुछ एड ऑन करना चाहते हैं या अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हेलो जी सर, मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैम नमस्कार सभी को, डॉक्टर दीप्ति गौड़, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। और टीचर के साथ साथ मैं भी एक एजुकेशनल काउंसलर हूँ। साइकोलॉजी में PG भी किया हुआ है मैंने और डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो मैं भी एक एज ए करियर काउंसलर वर्क करती हूँ। और मुझे मैम की ये बात बहुत अच्छी लगी कि बच्चों के बीच में बच्चों को ये लगना चाहिए, उनके अंदर एक बात आनी चाहिए, आई एम द बेस्ट। यानी कि हर एक, जैसे जब भी हम लाइफ स्किल की ट्रेनिंग भी देते हैं तो उसमें हम ये बताते हैं कि व्यक्ति को स्व जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेल्फ लव बहुत जरूरी है। आपके अंदर जो क्वालिटीज है यानी और जो स्ट्रेंथ्स है, आपकी जो वीकनेसेस है वो पता होनी चाहिए। स्ट्रेंथ पता होंगी तो आप उसको और अपग्रेड करेंगे, और वीकनेसेस पता होंगी तो आप अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे हम देख रहे हैं कि बच्चों में जो डिप्रेशन है फिर वह नहीं आएगा। तो मैम के द्वारा बताई गई जो बातें हैं वो बहुत ही उपयोगी है। और स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि हम भी अपने क्लासरूम टीचिंग में और करियर काउंसलिंग में आपके द्वारा बताई गई बातों को निश्चित रूप से प्रयोग करेंगे। और पाई का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, हर्षवर्धन सर का, जो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते रहते हैं। और आपकी जो वेबिनार्स होते हैं बहुत उपयोगी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शारदा मैम।
Good evening, sir. Good evening. Actually, your whole session was fantastic. Every sentence was a motivation for the students and, in fact, for all of us. One thing it attracts me a lot that you said a sentence, rest is best before the test. ये सेंटेंस मुझे मतलब कुछ यूनिक सा लगा और आई थॉट कि मैं भी अब आगे अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए ये सेंटेंस को मैं यूज करूंगा। तो ये मतलब सब तो बेस्ट था, लेकिन ये सेंटेंस मुझे बेस्ट लगा रियली। एंड वन थिंग यू सेड दैट कि एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को, मुझे जो फील होता है, मैंने भी पहले ये किया है, आपसे भी सीखने को मिला कि एटलीस्ट 24 आवर्स उनको रेस्ट चाहिए। एटलीस्ट बुक्स को साइड में रखें, थोड़े म्यूजिक का यूज करें, रिलैक्स हो, ये ज्यादा बेटर है। कई बार देखता हूँ स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट एग्जाम देने जाते हैं तो बस में भी वो बुक्स लेके एकदम से लगे रहते हैं, तो वो चीज मुझे कहीं से भी सही नहीं लगता है। मैं भी उसी चीज को फॉलो करता हूँ कि एग्जाम से पहले आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखें, तो आप शायद बहुत अच्छे से एग्जाम को दे पाएंगे। रेस्ट एवरीथिंग वाज वंडरफुल। थैंक यू मैम। शारदा मैम, आई वुड लाइक टू कनेक्ट समथिंग ओवर हियर। जैसे कि आपने कहा था ना, पीयर प्रेशर होता है, कंपैरिजन होता है, ये वाकई बहुत सही है। हम लोग कई बार अनजाने में ही सही, घर पे सिबलिंग्स के बीच में भी कई पेरेंट्स कंपेयर करते हैं कि देख उसकी तो मार्क्स आ जाती है, तेरी नहीं आती है, तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चे पे प्रेशर बनता है। क्लास में मतलब अगर दोनों बच्चे एक स्कूल में है तो भी ये प्रेशर बनता है उनपे, क्योंकि टीचर्स तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है जो दोनों को पढ़ाती हैं। और मैम, मेरे सामने तो एक ऐसा केस हो चुका है कि वो बच्चा 12th में पढ़ता था और बहुत अच्छा था, मेहनती था। उसको गुस्से में टीचर ने ये बोल दिया कि इस बार तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है एग्जाम्स में। यू वोंट बिलीव इट मैम, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। एंड आफ्टर 1 week the results came and he had topped in his class. दैट इज लाइक जब टीचर्स बोलती है ना, वो बच्चों को बहुत हिट करता है कहीं ना कहीं। तो हमें एज एजुकेटर ये भी ध्यान देना पड़ता है कि हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों के साथ, कहीं अनजाने में ही सही हम उस बच्चे को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे। तो ये सब चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान में रखना पड़ता है जब हम बच्चों के साथ डील करते हैं। Rightly said, ma'am. Rightly said. I have like 2 children. दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक क्लास 12 में है तो एक क्लास 9 में है। माय डॉटर इज वेरी नॉटी, टॉम बॉयश है, तो मेरा बेटा बोलता है कभी किसी को मत बताना मैं आपका भाई हूँ, बिकॉज वो हमेशा डरता रहता है, मम्मा व्हाट विल हैपन इफ शी विल टेल कि मैं इसका वो, और इसको धमकी देती है, मैं ना आज तुम्हारे क्लास में जाऊंगी और बोल के आऊंगी कि तुम मेरे भाई हो। तो बोला मम्मा प्लीज मना कर देना। Then they start and whenever they come to know, वो मेरे से बोलते हैं आपका भाई इतना शांत है, आप इतना बदमाश कैसे हो। तो ये मेरे को लग रहा है पढ़ाई के साथ में तो करना ही नहीं चाहिए कंपैरिजन, बिल्कुल भी किसी भी मामले में नहीं होना चाहिए मैम। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे के अपनी पोटेंशियल्स, अपनी स्ट्रेंथ्स है। हम किसी भी 2 बच्चों को एक जैसा नहीं सोच सकते, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रख सकते। एब्सोल्युटली करेक्ट मैम, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके अलावा किसी रिस्पेक्टेड एजुकेटर का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप कोई भी प्री प्लान क्वेश्चंस को नहीं लेके आते हैं। जो ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चंस आते हैं हम डायरेक्ट उन्हीं क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो आप लोगों का अगर कोई क्वेरी है, कोई मन में डाउट है, तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करें और शारदा मैम से अपने क्वेश्चंस पूछें प्लीज। थैंक यू मैम। मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि इस टाइप के सेशन एज अ एजुकेटर वी आर जस्ट एबल टू अंडरस्टैंड, वी कैन गाइड टू द स्टूडेंट आल्सो, दैट्स आल्सो ट्रू, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन और अवेयर टू द पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स भी हमारे कुछ इतने रिजिड होते हैं ना, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कि इस टाइप के सेशन पेरेंट्स को जरूर देने चाहिए, कि पेरेंट्स को भी एटलीस्ट उन्हें भी समझाना चाहिए, कि उन्हें भी समझ आनी चाहिए ये चीज कि बच्चों को डील करना डेफिनेटली कि जितना बच्चा उनका है वो ही एज अ उनसे कहीं बढ़कर वो बच्चा हमारा है एज अ टीचर। तो डेफिनेटली हम समझ रहे हैं या हम समझा रहे हैं, बट पेरेंट्स का भी इतना प्रेशर होता है ना मैम कि वो भी कहीं ना कहीं बच्चों को हार्म करते हैं।
और उन्हें डिप्रेशन में डालना डेफिनेटली, क्योंकि इधर स्कूल का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, उधर घर का भी प्रेशर, क्योंकि पेरेंट्स भी समझने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें भी बस ये है कि हाँ मोबाइल लेकर बैठे हो, हाँ तुम स्टडी नहीं कर रहे हो, एवरी टाइम के अगर खेलने में लगे हैं बच्चे तो खेल ही रहे हो। यस, एक टाइम फिक्स होना चाहिए, बट वो बॉन्डिंग पेरेंट्स और बच्चे के बीच में इस टाइप से कैसे क्रिएट होनी चाहिए, तो ये चीज मुझे लगता है कि पेरेंट्स के लिए भी ना इस टाइप के सेशन होना कंपल्सरी है। मुझे भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए। Yes, I agree with you, शारदा Kusum मैम क्या ma'am. कहेंगे आप, प्लीज हाँ, गाइड अस। मैं बोल रही हूँ. Kusum ma'am, you are absolutely correct. And for that, the reason is that in our country, how to parenting is never taught, which is a very, very important and a very important subject in the countries outside India. आप देखेंगे European countries and all, they have their parenting sessions. They go for the parenting session. But in India, that is trial error, experimentation, observation. This is the way they are parenting. I'm telling you one thing, I feel so sad, like, for deciding the career for their child, they don't even research. टिल क्लास 12 बोलो, अभी मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ, मेरा अप्रोच बिल्कुल अलग हो गया है. मैं पेरेंट्स से एक ही बात पूछती हूँ, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, योर चाइल्ड और मार्क्स? अगर वो मार्क्स एक साल वो मार्क्स कम भी लाता है और एक साल वो आप उसको रिपीट भी करा लेते हो, सो व्हाट? then they ask, then they don't have any, just you have to ask good questions. अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाता, so what? How will it make a difference in your life? अगर आप उसको एक इंजीनियर बना देते हो, 10,000 की नौकरी दिला देते हो, तो that child who is not interested in being an engineer, मैंने अपने स्कूल में देखा है बहुत सारे बच्चों को, जो कि क्योंकि मैं साइंस की ही टीचर हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो मेरे अगर 40 बच्चों की क्लास होती है तो उसमें से 20 बच्चे दे आर एक्चुअली मेड फॉर साइंस. बाकी लोगों को साइंस इसलिए दी जाती है कि साइंस 12 के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चलो कोई भी ऑप्शन हो जाएगा, तुम कॉमर्स भी ले सकते हो, तुम आर्ट्स भी ले सकते हो, तुम ये भी ले सकते हो. लेकिन वो पेरेंट्स करियर काउंसलर के पास नहीं जाते हैं कि ये पता करने के लिए कि मेरे बच्चे के लिए बेस्ट क्या है. वो अपना उसमें गूगल में सर्च करते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, वो भी सर्च भी नहीं करते. किसी ने बोल दिया कि मेरे बेटे ने ये, अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आई है, शी इज फ्रॉम देहरादून, अपना करियर काउंसलिंग कराने के लिए. तो उसके पापा ने मुझसे and today that girl called me up from Goa and said, ma'am, my father is ready. So you have to make them understand what is more important. Your child, can you replace your child from lakhs of children in the world? लाख बच्चे खड़े हैं और तुम्हारा एक बच्चा, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है. अगर वो ना रहे तो ठीक है, खुश रहोगे उसके बिना? मैं तो यही पूछती हूँ. उसको दिन दिन मत तिल करके मत मारो, तिल करके मार रहे हो उसको. जो बच्चा इज इंटरेस्टेड इन ह्यूमैनिटीज, उस बेचारे को साइंस दे दी तुमने, नहीं कर पा रहा, नहीं चल पा रहा है. सो आई थिंक इफ यू हिट ऑन द राइट प्लेस, क्योंकि वो राइट प्लेस में हिट करने से ही उनको समझ में आता है. तो समझ रहे हैं, काफी पेरेंट्स समझ रहे हैं. वो लोग अभी बहुत सारे पेरेंट्स, they have gone for career counseling for their child. And one thing, a very